So guys, let's continue this and we come up to the this what we have left it. हमारा that is forewarned is forearmed. हम लोग assumptions biases पढ़ रहे थे, काफ़ी सारे biases हमने पढ़े थे. Now we are continuing this. ठीक है. When it comes to the business decisions, there are really such thing as no-brainer. That is true. ऐसा कुछ नहीं होता no brainer होता है. Our brain is always at work. Sometimes unfortunately the way the hinder rather than the then help us. Okay, ये होता है हमारे साथ. At every stage the decision making process miss preconception biases other tricks of the minds can influence the choices we make. वही बात कर रहा है. देखो मैं ज़्यादा रीड नहीं करूँगा. You can read it all together with me or I will highlight it. Distortion. The people, the higher the stakes, the higher the risk that we got. Traps that we have reviewed can all work in isolation, but even more dangerous when they are considered and amplified with one another. Because यही होता है रियल लाइफ में भी वन एंड अनदर ही आते हैं साथ में. एंड राइट नाउ इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग एंड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. A dramatic first impression might anchor our thinking. That is the basic. देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको डील करने के लिए सॉल्यूशन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही ज़रूरी है. तो एटलीस्ट आपको जब बायसेस के बारे में पता होगा तो यू कैन एवेल्यूएट एंड टैकल विद दैट. बट अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते. Even if you can't eradicate distortion and reinvent the way of your mind work, you can build a test and discipline into your decision making process that uncovers the error before making and taking actions. Benefit increasing your confidence and make choices. जॉन एस हेमॉन जो थे, a consultant decision making and a former professor Harvard Business School in Boston, and Ralph जो थे is a professor of the Duke University, नॉर्थ कैलिफोर्निया के. हार्वर्ड जो थे इज़ अ फ्रैंक Thompson Ramsey Professor of the Managerial Economics at the Harvard Business Schools and the co-author of the Smart Choices. ठीक है. Practical Guide to Making Better Decisions. Review Press. Reprint from the Harvard. Okay. ये पूरा चैप्टर उन्हीं की तरफ से था. अब नेक्स्ट मूव ऑन टू द चैप्टर 2. Who has the D? ये चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है ना. इट विल हेल्प यू टू हाउ टू मेक अ बेटर एंड द बेस्ट डिसीजंस. इन ब्रीफ हम क्या पढ़ने वाले हैं. Develop the business. Every success mishaps, every opportunity seized, missed, decision someone's made or failed to make. Yet in many firms, decision routinely stalled inside the organization, hurting the entire company performance. Culprit कौन होता है? Ambiguity over the who's accountable of the decision. That was a missing milestone for rolling out the new models. Marketers and product developer each thought they would be responsible for the deciding the new model standard features and color. Result conflict over the who has the final say. Endless revising the decision and mislead happened to the lost sales. How to clarify decision accountability, assigning the clear roles and decision that affect most of our firm performance, such which market to enter, where to allocate capital, how to drive the product innovation, and rapid. Think rapid. This is not the rapidly, this is the framework that we are talking about, the rapid framework. What is framework says? Who should recommend a course of action on a key decision?
हु मस्ट एग्री, मतलब स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे जो बोलेंगे वहाँ पर, डिसीजन मेकर्स के अंदर बोर्ड मेंबर्स भी बोल सकते हैं. हु विल परफॉर्म द एक्शन, एग्जीक्यूटिव्स कौन से होंगे वहाँ पर. एंड whose input is needed to determine the proposal facility. डेटा किसका चाहिए, डेटा के लिए कौन अकाउंटेबल होगा, एंड हु डिसाइड, दैट इज द अल्टीमेट, दैट इज अ डी. Bring decision to the closer commitment of the organization to implement it. Effectively, idea in practice, a rapid decision model. Roles and responsibility. Okay, people who and are responsible for, recommend, making proposals and the key decisions. Making proposals करेंगे वो, gathering inputs करेंगे वो, providing data and sensible choices in fashionably manner, consulting with inputs provider, hearing views and winning and buying. Agree कौन करेगा, modify with proposals, recommendations and concern about the original proposal. Unresolved issue and decide that if A or R can resolve the difference. If necessary, veto power over the recommendation. Perform. Executive decisions होंगे यहाँ पर, seeing the decision permanently prompted effectively. Input कौन से होंगे, relevant facts recommended and just shed light on the proposal feasibility and practical. अब main हो गया D. Serving a single point of accountability, bringing the decision like a CEO, impasses the decision making process and committing to the organization's. Okay. Decision roles pitfalls. In assigning the roles, ensure only one person has the D, and if two or more people think that they have changed in a particular decision, tug of war results. Watch the proliferation of A. Too many people have the veto power can paralyze the recommendation and agree and slow down the organization. Avoid too many I's. Input भी हमें relevant ही रखते हैं, ज़्यादा input नहीं रखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स को एवेल्यूएट करेंगे. डिपार्टमेंटल स्टोर है चेन जॉन्स लुइस का. कंपनी बायर्स वांटेड टू इंक्रीज द सेल्स एंड रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी. इंक्रीज सेल्स, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी बाय ऑफरिंग द फ्यूअर सॉल्ट्स एंड पेपर मिल्स मॉडल्स. Streamline product set without involving the sales staff. Okay, and sales fell. Upon visiting the store, buyers saw the sales people not recommending the strategy behind the recommendation, have half the shelf space to match the reduction of the product range. Okay, rather than maintaining the same space but stocking more of the product to fix the problem, the company have gave buyers D how much space product category would have. Sales staff had a if the space allocation didn't make sense to them, they couldn't force additional negotiation. They also had P implementing product layouts in the stores. Okay, one decision rule was clarify sales health at the pepper mills exceeding the original levels. Amazing. Bain and London office का, he formally led Bain's global organization practices and Mercia, जो थी लीड मेन कंपनी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस, इज द पार्टनर ऑफ द फर्म बॉस्टन फर्म. दे को ऑथर्स एंड डिसाइड टू डिलीवर 5 स्टेप ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन. हाउ इनका था रैपिड वाला 5 स्टेप वाला. फास्टर एंड बेटर डिसीजन, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अ चेकलिस्ट फॉर द मेकिंग ऑफ द फास्टर एंड द बेटर डिसीजंस के लिए. ठीक है, ये हम इवैल्यूएट करेंगे बाय एरिक क्लासन के द्वारा ये बनी थी. लेट्स डू इट. ये होता है 3 बिलियन डिसीजंस बनाते हैं. मेक बेटर सो रियल. Decision by practicing technology based on the behavioral economics. 100 managers. In the 3-month study of 100 managers, we have found the managers who made decisions using the best practices achieved their expected 90% of the time, and 40% of them exceeded the expectations. Okay, so framework यूज़ करने से इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आई. 90% सक्सेस रेट हो गया, राइट, एंड 40% ने एक्सीड भी किया. हम देखेंगे बाकी लोगों ने जो किया. Other studies have shown that effective decision making increases the number of good business decisions 6-fold कर देता है वो.
Nearly half. Okay. So although there is a great potential of using the best practices to improve the decision making, many organizations are not doing it. Okay. नहीं कर रही वो. In the study of the 500 managers and executive found that only 2% regularly apply best practices in making the decisions, and the company system and making sure that improvement and there are the practice. ठीक है, तो ये आप थ्योरी का क्या होगा, थ्योरी आपकी वर्क ही नहीं करेगी जब तक आपने उसका प्रैक्टिकल कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाया. फ्रेमवर्क मतलब कुछ ऐसा नहीं है आपने कुछ बनाया. इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप प्ले करने जाते हो, अगर आप प्ले कर कोई गेम खेलने जाते हो तो आप वार्म अप करोगे 10 मिनट, ठीक है, वर्कआउट करोगे 10 से 5 मिनट. तो ये होता है, ये एक प्रोटोकॉल्स है, ठीक है. उसके बाद आप पानी नहीं पियोगे गेम्स में, इतने गेम्स के बाद रेस्ट लोगे, रेस्ट भी ज़रूरी है. ऑल दीज आर द फ्रेमवर्क, दिस इज ऑल सेट. आप उसको डिस्कवर नहीं कर रहे होते हो, राइट. तो एक फ्रेमवर्क आपका होना चाहिए जिसके आप बेसिस पे जाओगे किसी भी चीज़ के लिए. चलो हिस्ट्री पे पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत. क्या हिस्ट्री है ये? मोर हैज़ लॉन्ग बीन अ मोर आर्ट देन साइंस. आर्ट का क्या होता है? इट्स लाइक डिस्कवरेबल, इट्स लाइक डूइंग समथिंग. साइंस इज समथिंग लाइक अ प्रोसेस. That is partly because recently more managers have relatively little access to the accurate information, fewer decisions tools are widely used, and pros and cons. This popularized Benjamin Franklin is probably the most common and nearly 250 years old, and there is an unfortunate circumstance that economics in the 20th century was based on the theory that people make rational choices when given a good information. A theory proved to be somewhere between the 40 and the completely wrong. Okay. Thank to the thank to the thank to the revolution in behavioral economics led by the Nobel Prize winner Daniel Kahneman. साइकोलॉजी क्या होती है? देखो साइकोलॉजी देख लेते हैं एक बार. We are predictably irrationally. Behavioral economics have uncovered the range of the mental shortcuts and cognitive biases and distort our perception and hide the better choices. Okay, hide कर देते हैं from us. Most business decisions go rapid groups and consists of the work to compound our individual biases. Further, most business decisions are made under the stress of the high uncertainty. Okay, this is very true. And rely on the gut feelings of the intuition, of the tradition and the mental discomfort. Decisions are hard work, and that is a strong emotional impetus just to make them move on. अब टेक्नोलॉजी का भी पार्ट आ गया, अब तो हमारे पास यही भी आ गया. सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड मेनी मैनेजरियल टास्क over the past was the easiest shift has been the foundation of the better decision making. Leaves the job unsatisfied, unfinished, but leaves the job unfinished. Behavior economics show that providing the more complex and information does little to help the manager, the team, and main challenge they must overcome to make better choice. As a result, business can't see the dramatic improvement in decision making by simply implementing more big data analytics software like SAP and Oracle and IBM. Salesforce, ठीक है जैसा. So, what managers do during the cover pop, our cloud solution for applying the behavioral economics to decision making. We perform hundreds of the experiment with the 10,000 of the decision maker. We found that the most successful decision making approach boiled down to the simple checklist. ठीक है, ये मैं याद है, but it is important to note understanding the item in the list is not enough. The checklist must be used effectively since our biases don't go away just because we know there are. Got it? तो ये देखो, ये इतना explicitly कर रहा है. You know, this is so much gold. You're getting it right now. Each time you face a decisions, use these steps to tool to contract your biases. Okay. Write down the 5 pre-existing company goals prior to your decision making will impact. 5 pre-existing goals, right? Focusing on what is important will help you avoid the rationalizing the trap and making up the reason for your choices. Goals लिखने हैं 5. ठीक है. Next step है write down least 3 but ideally 4 or more realistic alternatives. Okay, alternatives भी लिखने हैं हमें. उसके कितने लिखने हैं? At least 3 to 4 alternatives. क्या हो सकते हैं और क्या होंगे? It might take little effort and creativity but other practice bring decision more expanding your choices.
कूल. राइट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यू आर मिसिंग. अब जो आप इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हो वो कैसे आप राइट डाउन करोगे? यू आर रिस्क इग्नोरिंग वॉट यू डोंट नो बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय वॉट यू डू नो. ओके, स्पेशली टूडेज मिस इन्फॉर्मेशन. तो क्या आप मिस कर रहे हो वो लिखो. फोकस ऑन मिसिंग. डू यू मिसिंग एनी थिंग? फोकस ऑन मिसिंग. जैसे ही फोकस करोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि आपको आप उसमें आ जाते हो, कन्फर्मिंग बायस में आ जाते हो. तो कन्फर्मिंग बायसेस में आपको जो मिस ना कर दो, इसलिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है. राइट. राइटिंग डाउन द इम्पैक्ट ऑफ योर डिसीजन विल हैव 1 year इन द फ्यूचर. ओके, तो फ्यूचर सी करना है आपको. Involve a team of at least 2 but not more than 6 stakeholders. ठीक है. टेलिंग अ ब्रीफ स्टोरी अबाउट द एक्सपेक्टेशन एंड डिसीजन विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई स्मार्टर सिनेरियोज एंड कैन प्रोवाइड अ हेल्पफुल पर्सपेक्टिव. ठीक है. मोर पर्सपेक्टिव रिड्यूस द बायसेस एंड इंक्रीज बट द बिगर ग्रुप्स एंड डिमेंशनिंग रिटर्न्स हो जाते हैं. और उनके जिसमें हमने पढ़ा था कि 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. रीच 7 पीपल इन द ग्रुप एडिशनल मेंबर रिड्यूस बाय द इफेक्टिवनेस बाय 10%. तो 6 लोगों से ज़्यादा की मीटिंग नहीं होनी चाहिए. मीटिंग 2 से 6 की, नॉट मोर देन दैट. ओके, सो जस्ट गिव मी 2 minutes. जब तक आप ये रीड करो मैं 2 minute में आता हूँ. ओके, अब क्या होगा? राइट डाउन व्हाट यू हैव डिसाइडेड. इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड. और ये भी लिखना है हाउ मच योर टीम अबाउट योर डिसीजन. एंड फॉलो अप भी डिसाइड करना है. ओके. ठीक है. लार्सन ने लिखा फाउंडर थे आपके एंड अप्लाई द सॉल्यूशन. कौन थे? बिजनेस पीपल. डिसीजन टुगेदर MIT एंड हार्वर्ड से थे. डिक्लेयर्ड ऑफिसर्स थे. इन्होंने ये चैप्टर 7 स्टेप फॉर्मूला दिया था. ठीक है. फॉर्मूला हम एक बार रिवाइज करते हैं. फॉर्मूला क्या क्या था? सबसे पहले जो हमारा चीज़ें थी, 7 स्टेप फॉर्मूला था. 5 गोल्स लिखने हैं, उसके बाद 3 से 4 ऑल्टरनेटिव्स, उसके बाद मिसिंग चीज़ को लिखना है, फ्यूचर सीख करना है. ठीक है. तो पहला फॉर्मूला क्या है? 5 गोल्स लिखने हैं. दूसरा क्या है? मिनिमम 3 और 4 ऑल्टरनेटिव लिखने हैं.
राइट। तीसरा स्टेप क्या है, जैसे क्या आप कुछ मिस कर रहे हो, मिसिंग इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद फ्यूचर आपको देखना है उसका 1 ईयर का। और टीम में एक ये एक कॉशन एक तरीके से, जो ग्रुप मीटिंग करनी है आपको, उसमें आपको 2 से 6 लोग करने हैं मैक्सिमम, क्योंकि हर 6 के बाद हर एक से एडिशनल पे 10% और 8 आ गया तो 20%, तो ऐसे वो बढ़ता जाता है, तो इतना ही रखना चाहिए। रिकॉर्ड करना है आपको सारी चीज़ें, इवेंट उनके क्या, कोई सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टर है या फिर कोई उसके। और 7 स्टेप क्या है आपका, फॉलोअप करना है आपको 1 महीने बाद। ये हो गया वैसे हमारा उसके लिए, बट ये जैट के लिए रेलिवेंट कैसे है वो देख लेते हैं। जैट के लिए आपको गोल्स लिखने हैं, व्हाट यू वांटेड टू अचीव, जो एक ही होगा। ऑल्टरनेट मतलब आपको एक एक्सपेक्टेड लिखना है कि एक्सपेक्टेड क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक या दो जो भी है। उसके बाद आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे हो, ये आपको देखना है। उसके बाद फ्यूचर तो नहीं लिखना, ये इसका कोई रेलेवेंस नहीं है उसमें, क्योंकि आप ये इसमें कवर कर चुके होगे सेकंड स्टेप में। एंड गैप ग्रुप मीटिंग भी नहीं हो सकती वहाँ पर, रिकॉर्ड तो आप कर ही चुके हो। तो ये 3 स्टेप करने हैं क्या, पहले आपको गोल लिखना है, उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स लिखने हैं, उनके बाद मिस अगर कुछ है तो ये 3 स्टेप आप करेंगे फॉलो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हिसाब से। क्लियर। क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे इस पर बेस, तो डोंट वरी ऑन दैट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये हम चीज़ों हमें याद रहे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये 5 स्टेप फॉर्मूला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जो हमें इम्प्लीमेंट करना है दैट इज़ दिस। कूल। जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन। ओके। ओके, चैप्टर 4 जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उस पर आते हैं आइडिया जनरेशन, द बेसिक्स। ठीक है, देखते हैं ये चैप्टर कितना बड़ा है पूरा। बहुत छोटा सा चैप्टर है। टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन यू नीड टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन यू नीड ऑप्शंस। बिल्कुल सही बात है, वी नीड ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स ऑफ दोज ऑप्शंस आफ्टर weighing the metrics of the varying alternatives, better to position to best decision and situation. We need to evaluate what the decision. In the absence of the option, people face only yes or no situations, which is not we do this or not. Choice really product effective. What we want alternatives represent the range of possibility even if the team must actively produce them. How to generate ideas? Generate कैसे करेंगे हम? Consider example of the George, marketing manager of the consumer product company George, and his team looking for a way to increase the laundry detergent sale in the Latin America. Okay. ये बहुत काम आता है, इन PDPs में भी काम आता है, वो सिचुएशन दे देते हैं आपको तो एनालाइज करना होता है, तो दिस विल हेल्प यू टू मेक डिसीजंस। As sales is 20% below what they had anticipated a year before. Okay. First enter market. Okay. George gathered the team and asking the suggestions. After some silence, George suggested that they consider changing the current packaging. Follow this cue. Sophia Times with her own reflection about the packaging and the consumer trend. Okay, another person then describe the packaging of a product that has been sold particularly well in the Latin America. Everyone seems to have an idea to offer to packaging and how to change there might be improve the sales. Okay, the meeting includes the creation of a task force to research the new packaging options. Okay, it is the change in the packaging is the best solution for the company. Oh,
find the loop. That's so amazing, right? तो क्या हुआ अल्टीमेटली कि उन्होंने सेल्स इंक्रीज करनी थी, और सेल्स इंक्रीज करने के लिए उन्होंने क्या, पैकेजिंग, एंड वो डिस्कशन पैकेजिंग पे ही चला गया, पूरा नैरो डाउन हो गया. End up making deal. So that's the fun part. So possibility A task force change the new packaging में है of producing of the real value. Okay, but the given problem of the disappointing Latin American sales. But the problem of disappointing Latin America sales, there may be alternative solution, even the greater value. For example, a change of the pricing of the product, different advertising and promotion. Perhaps the product itself should be altered in some tangible way. Great, amazing. However, George and his team will never know the merit of these other solutions if they immediately take the packaging route. What went wrong? आ जाओ मेन टास्क पे, आ जाओ हरक्यूलियन टास्क पे. इसको हम लोग करेंगे इससे, ठीक है. What went wrong? यार ये ज़्यादा डार्क हो गया ना, इसको थोड़ा सा शेड में ले लेते हैं. क्या था जो गलत गया? ठीक है, सो लेट्स सी. In this scenario, George did not successfully engage in team in generating alternatives. ये नहीं किया हमने, तो we did haven't generated alternatives. And he didn't promote healthy debate and conclusive conflicts. Okay, instead of the excessive group harmony resulted in a single-minded pursuit of the first idea emerge. ये हुआ investigation of the packaging option and little creativity or the innovation idea. Okay, there is no idea suffered. Okay, the group settled on the first alternative suggested and been a manager's idea. अब क्या होता है, had been a as a decision maker, the goal is stage to identify the many alternatives as possibles. Okay, brainstorming in a common way and generates various idea of the course of action. Okay, so first of all, you have to discuss all the possible, all the नहीं हो पाएगा, maximum possible alternatives. इट कैन बी प्राइस, इट कैन बी प्रोडक्ट. 7 पीस पे आ जाओ आप, बहुत सारी चीज़ों पे आ सकते हो. ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. अब क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की, सॉरी, उन लोगों ने, तो वो देखते हैं हम लोग की ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू जनरेट alternatives and the problem solution handled by the individual, but works in the groups because the insight and the experience of many people almost produce more ideas than the person alone. Okay, no matter how brilliant that person might be. ये तो है ही ऑब्वियसली, एक वो एडीएम भी है ना. Begin with a blank flip, the chart page and the clean whiteboard. Ask the people about the suggestion of the idea to their heads. Ask individual to take a few minutes to develop their own. Either way, record these ideas but don't discuss their merits and allow criticism. समझ में आया? तो क्या हो गया, अभी सिर्फ हम लोग पॉसिबल ऑफ आइडियाज डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उनके मेरिट्स एंड उनकी वैल्यूज नहीं करेंगे. सो वी कैन डू 7 पीस मॉडल ऑल्सो हियर, दैट इज ऑल्सो वर्क हियर इफ यू नो 7 P मॉडल. ठीक है, बट इसमें एडिशनल चीज़ें भी आ सकती है, तो ओपन एंडेड रखो, बट 7 पीस को भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो. इफ यू आर लीडिंग इन द सीजन, इन द सेशन, पीस कैप्चर्स नेचुरल एंड रिकॉग्निशन ईच कॉन्ट्रीब्यूशन. डोंट do anything that would signal that you like or dislike. Okay, that is very important, isn't it? For example, avoid statement like thank you Martha, that's the best idea I have heard among the all. Got it? तो आपको उसको कैटेगरी या रैंकिंग नहीं देनी है. थैंक्स राकेश, आई डाउट इफ़ योर ओपिनियन इज़ फीजिबल बट आई विल ऐड इट टू द लिस्ट. ये भी नहीं करना, जिससे वो क्रिटिसिज्म हो जाएगा. Like these pages, people are against the idea even more discussing their merits. Okay, neutrally, it's essential to brainstorming leader has a substantial influence over the group. Okay, brainstorming work best when people feel comfortable in speaking their minds. Okay, especially when their ideas conflict with those peers or their boss. Okay, the atmosphere must always encourage the introvert people and participate. We know the experience. There are some people who naturally speak up in the group sessions. They tend to do outgoing and assertive, and they can easily dominate the discussion. But being ongoing assertive discussion, rooted in having a superior ideas, the person silently or far end at the table may have the best idea of the group. If you are
leading the session. Your job is to elicit their ideas. बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबका इन्वॉल्वमेंट हो, ऑल इन्वॉल्व हो ग्रुप लीडर की तरह. ओके, टिप्स फॉर जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स. ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो ये कैसे करेंगे हम? टिप्स फॉर जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स. When you meet and generate alternative choices following these steps, invite outsider, expert and the novices and the people theoretically you meeting outside the fresh idea, different perspective in the meeting area. तो इसमें different people को लाना है. Conduct a external benchmarking observation and how companies are facing problem and similar to use. Okay, competitive को study करना है. Engage the team member to step out of your traditional zones when generating alternatives and trying to brainstorm the new idea. प्रोडक्ट आइडिया आपको लिखना आना है, इनवाइट करना है मार्केटिंग ग्रुप को, पार्टिसिपेट करना है, आस्क टू थिंक अबाउट द आइडियाज एंड फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, creative surfaces and think about the hats on. Ask probing questions such as what alternative should we consider. Okay, तो ये आपको क्वेश्चंस पूछना है क्योंकि राइट क्वेश्चंस लीड टू द स्मार्ट क्वेश्चंस लीड टू द राइट थिंग. ठीक है, तो concerns about. In this way, you avoid deciding too early and the solutions may not be the best one. Okay, great. Among the most important probing questions that those test the validity of the group assumptions. Those assumptions should be made explicitly and discussed openly. Be willing to consider discuss the views different from your own. This is not easy. The group leader should be model in this behavior. If the leader is demonstrating tolerance for the interest and the idea contrary to their own interest, others may notice and follow suit. Revisit the abandoned alternatives from time to time to ensure that they have discussed the sound reasons. Don't overlook hybrid alternatives. In many cases, if it's possible to combine the best feature of the two existing idea into the new superior one, great. A hybrid car bring together environmental fuel efficiency and of the electric power alongside the dependability of the standard gas engine. Even the minivans that appears in idea combine the both features and the boxing in the comfort of the passenger car. In this stand, it may be useful to ask people to write down their ideas and pass them to the session leader. Okay, rather than voicing them loud, a creative problem solver who quiet in the group setting may be no trouble articulating and the written format. Okay. Encourage open, candid dialogues by making it clear that outside that the final outcome is not predetermined whether everyone's inputs will be valued. Clear. ये सही है बहुत चीज़. Suggest that the people think outside their individual and departmental roles, they should focus on the best of the company, using all information available. When participations are unable to brainstorm any further, look at the list you have written down on the flip chart. How many ideas are there? If you have many options, it is possible the group is somehow common themes. Okay, for example, the detergent company team might group an alternative for the boosting their sales during these highlights: packaging, pricing, retail, display, special promotions, production form reformulation. Relate ideas and help to focus the efforts. There are some evidence that you can get more out of the brainstorming when ideas are generating independently and later brought into the group session, which people can share and build on their ideas. Okay, this technique prevents the immediate occurrence of the idea, so the precautions of the peer, and that normally occurs peer when they are talking to each other. There are plenty of opportunities for the discussion and the conversion. A wide variety of alternatives helps you to make the informed decisions. When you encourage a team participation, facilitate creative conflict and listen to the ideas that you're likely to generate full state and the option and will serve you well as you continue through the decision making process. Got it? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जीडीज का ये मान लो जान आ जाएगी आपको जब आइडियाज़ जनरेट करने हैं, दैट विल हेल्प. और ये बहुत लेसन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रेड पान से लिख लेता हूँ.
जब भी हम लोग ऑल्टरनेटिव आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, फर्स्ट सीक ऑल, और मैक्स लिख लेते हैं, नॉट ऑल, मैक्स alternatives before bottom downing to the one in discussion. और different people आएंगे इसमें, ये वाली चीज़ भी है, and these are the other things that we have to discuss. ओके, बेटर ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात आती है। अब हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे जब उसमें क्या आएगा, ठीक है, एक सेकेंड हो गया। सो आई एम स्टॉपिंग एट दिस चैप्टर राइट नाउ एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस। हम लोगों ने कवर कर लिया, ऑलमोस्ट 60 पेजेस हो गए हैं हमारे 200 पेजेस में। सो आई ट्राई टू डू कवर एज मच एज पॉसिबल सो दैट कि हम लोग पास्ट ईयर भी हमें कंप्लीट करना है।